Hello, hello everyone. How are you? Uh, बस कुछ मैं सेट कर रहा था. Okay then. Hello everyone. तो हम लोग 5+0 के गेम्स खेलेंगे. तो पहले गेम स्टार्ट करते हैं. We have let's see D5 खेल. Okay, we have a modern banana here. So this is the opening that I usually play, and someone is playing it against me. So okay, this is the Bishop E7 line. So there are two variations in modern banana. Player can go G6 and Bishop G7, or he can go Bishop E7. So he preferred Bishop E7. Let's see how the game goes. That's a knight E6. The idea of A4 was that after he takes on this pawn, and I take, he would push B5.
So to prevent b5, we play a4, but now he has played rook b8 to like further put support on this square. So the battle is about on the queen side, and this is usually the case in modern Benoni. So to prevent him from playing b5, we can play a5, so that when he plays b5, we can pass in the pawn and not let him develop on the queen side. Apart from this, I would also like to put pressure on the d6 pawn because this is one weakness which black has. And my idea could be to play f4 and then e5. But for now, I'll first play a5 to prevent this, and then I'll probably start thinking about f4 and then e5. 57, normal move. I think now we can start with this push. He can take. Okay, can I take this? Okay, I cannot. But I can this way. Can I push? Yes, and then the knight can go on this square, or he can go on this square, putting pressure on this pawn. But I can push my pawn first. So yeah. So the idea here is if he takes, the knight is hanging, so he has to move his knight. If he moves his knight here, then I can push this d6, attacking both of this bishop and knight. So yeah, he didn't take this pawn, which is correct. Um, what I should do here is push this. Uh, okay, I'm low on time as well. I have to manage my time. I'll first move my king away from any of the check ideas, and I'll most probably develop my bishop, but this pawn will be hanging, so I cannot. Yeah, the time, but I still have 2.5 minutes, so it's more than enough for me. F5, I can. I don't want to take. Now F5 has developed a weakness on this E6 square, so I'll try to exploit this weakness as well. Let's first develop the bishop. I am giving up this pawn because I don't care about this pawn. Um, yeah, so if he doesn't take, then I can take this pawn off, and then this pawn will be hanging. So yeah, I can do this. When he takes, this pawn will be hanging, so I can take it with the knight. Okay, but he took the knight first. I can take this bishop because this queen is hanging. Yeah, I can technically take this bishop, right? I think he just did a blunder. Now, if he take my queen, of course. Now I am just a piece up. Yeah, yeah. This bishop is hanging right now, but hmm, no, I can go here. Like maybe some discovered attack ideas on this queen. He can push this pawn, but he cannot because I can just take it. Um, I can take this pawn. I can take this pawn. Okay, he moved out of the way for this discovered attack ideas. I can take this pawn, attacking the queen. He blundered. Yeah, he resigned. So here the point is I can give this check.
Basically, even if the knight was hanging, this bishop was there to attack. So he got in a fork. Also, he got in a discovered check. So yeah, this was not. Let's see how did we play. Oh, so we got 92.8. Let me share this as well. Yep, let's see. Yeah, so we got 92.8 accuracy, and more or less the game we did one mistake and our rating was 2550. I don't think that you're able to see it, but yeah, trust me. Let's go ahead to the next game. Here we have Funadura and we have French defense on the board. He most okay, he didn't take. He is going for the classical variation of French defense, which is like I'm very comfortable in playing the classical defense, and d takes c5 is not the most accurate move here because it gave my bishop a very active diagonal. So you would want your bishop to be placed on this square because it's a very active square for your bishop. Now one trap here is if I castle, then I can get into some bishop takes h7 ideas. Hmm. And I don't want. So what I can do is I can first maybe play h6 or play f6 or develop my knight first. So I'll first develop my knight. He will most likely play bishop f4. Okay, he went queen e2. I don't like this move. I don't know why. Hmm. Can I not push this pawn? Then what? If I push, he goes here. He can jump here. Technically, yes. Okay, let me stop this. He castled. So yeah, I also want to castle, so I will get out of these bishop takes h7 ideas. He'll play b4, but my bishop has this a7 square to get in, so it's fine. Now my idea would be to play f6 to put pressure on this pawn, and if he takes, then I'll take with my knight and get a open rook file, and this pawn will be prevented defended with my bishop. So this would be my idea for now. I can play f6. Oh shit. Man, I messed up chess. Yeah. Okay, but okay. We are in the same situation. Never mind. Got saved. मैंने गलती से f6 की जगह f5 चल दिया. But never mind. He took it. So it's fine. हम्म. अभी इसमें दिक्कत ये होती है कि मेरा e6 बहुत वीक है. तो मुझे इसको डिफेंड करने के लिए कुछ कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी. But I have this. This bishop is hanging. क्या मैं इसका मिसयूज कर सकता हूँ? At least not right now. Oh no, it's a mistake. Actually, he can take with the knight. I cannot take this bishop because my bishop is hanging. So yeah, I have to take this now. He'll take with the queen.
defend this bishop. So it was a mistake. Now I cannot take this bishop. So I can still go queen b6. This pawn ब्लंडर कर दिया भाई. मैंने चेक तो देखा ही नहीं. ओके, देखते हैं क्या होता है. क्या मैं इधर जा सकता हूँ? जा सकता हूँ. हम्म. अभी इसको भी बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे मेट करनी है मेरी. बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा. ये इधर चेक दे सकता है. हम्म. फिर मैं तो भागूंगा तो ये चेक. अगर मैं ये चलता हूँ तो ये बिशप चेक आएगी. अगर मैं b5 चल दूँ तो b5 तो भी कुछ फायदा नहीं है. It's mostly it's lost for me. There are not many ways to win, but this is still fine because ये चेक देगा. मैं इधर जाऊंगा तो ये पॉन नहीं मार सकता बिकॉज मेरी क्वीन डिफेंड कर रही है. एंड अभी करंटली बिशप e5 के आइडिया है बिकॉज मेरा नाइट है. नाइट e5 जरूर खेल सकता है बट इट्स स्टिल फाइन. It makes sense for him to think a lot in this position. Yeah, as I thought, knight e5 is a move that could be played in this position because अगर मैं मारता हूँ तो वो मार के मेरी क्वीन ले लेगा. अगर मैं नहीं मारता हूँ तो वो ये मार देगा एंड देन फिर वो मेरी क्वीन ले लेगा. तो इट्स अ ट्रिकी पोजीशन. मैं बिशप चल सकता हूँ इधर टू गेट आउट ऑफ दिस चेक. से चेक दे सकता है बट मैं फिर भी बच जाऊंगा. तो या बिशप चलना स्टिल फाइन. या ओके. बट अभी नाइट ने ब्लॉक कर दिया तो ये चेक दे पाया मेरे को. वेरी स्मार्ट. और कोई ऑप्शन नहीं है. मैं रुक जाएगा. मैं जाऊंगा फिर ये चेक आएगी. इट्स ओवर. अब यहाँ पे डिस्कवर चेक है और फिर मेरी क्वीन चली जाएगी तो या नो पॉइंट. जस्ट रिजाइन. दिस वाज नॉट अ गुड गेम. या आई डिड अ ब्लंडर. लेट्स सी. It was a bad game. He did play like a. It's all fine. A6 is bad. H6 is fine. A3 is fine. Castles is best. F5 was a mistake because I think F6 would have been the best move. Okay. He wants me to go to bishop a7. I don't know why, but it's fine. Okay, queen takes was a better option. Hmm. Because this bishop. Look, this knight e5 was a blunder, of course. Yeah, this was a blunder. I figured this much. Knight if h5 would have been much better attacking this bishop, but yeah, it's just losing for me. This is all fine. Yeah, it's just losing then. Alright. Let's go for the next match. We have Quixus, I don't know how to pronounce this, and we have Slav defense, Semislav.
This is just some plain typical line. He'll take. He didn't. Now he'll take. Okay, he don't want to take it. Isn't this okay? It's not a free bishop because knight is there. I thought it's a free bishop. Do I have these ideas here? If I take, he takes this check, king comes forward, then this. Can I do this? I can, right? Why are you deleting your messages? No. Okay, let's just take this. And yeah, I'll take it again. um इसका यार ये नाइट इधर आ जाएगा तो बिशप है नाइट है क्या मैं चेक दे सकता हूँ अगर मैं चेक दूंगा तो पॉन पुश कर सकता है जिसमें मैं ये मार सकता हूँ चेक देते हैं मेरे को था इधर अगर मैं आता तो फिर वो इधर ये चल सकता था इन विच केस मुझे अपनी क्वीन को दोबारा से भगाना पड़ता अभी मैंने चेक दिया है अगर हम्म देखो इस समय वो किंग इधर नहीं जा सकता बिकॉज मेरा क्वीन इधर आ रहा है अगर वो किंग को इधर लेके जाता है तो भी मैं ये चेक दे सकता हूँ फिर किंग इधर जाएगा फिर मैं दोबारा से चेक तो नहीं दूंगा बट मेरे पास रुक है f5 is of course a move but I can take this pawn and then we can first do this मैं take मैं एक मारूंगा अगर यार ये मार तो सकता है अब मान दो हम्म रुको रुको इधर लेके जाना है तो पहले मुझे एक्सचेंज करना चाहिए था मैं रुक को अगर इधर लेके जाऊंगा वो मार देगा ऐसा नहीं होगा मैं रुक को इधर लेके जा सकता हूँ इधर लाने के लिए हम्म चेक सही है मेरा आइडिया है पॉन लेने का तो फिर अगर मैं चेक दूंगा ये पॉन हैंगिंग है तो इसको मार सकते हैं मेरे पास अभी क्वीन जी सिक्स भी अवेलेबल है जिसके बाद क्वीन जी सेवन चेक आएगी तो आई एम नॉट इन अ बैड सिचुएशन राइट नाउ बिशप से भी मेरा क्वीन पे अटैक है क्वीन क्वीन पे जा सकता है ये फोर्स नहीं है बिकॉज बस क्वीन जी सेवन है अभी भी ओके मैं इस नाइट को पिन कर दूं क्या नाइट को पिन कर देते हैं ठीक है वहाँ पे चलता हूँ नाइट हैंगिंग है बिकॉज नाइट पिन है मैं मार सकता हूँ टेक्निकली अभी मैं बाकी अरे यार क्या किया
भाई यार जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। पहले G4 चलना था। टाइम में मैं पीछे हूँ तो दिक्कत तो रहने वाली है। Shit यार वो क्यों किया, अच्छा खासा जीता हुआ गेम था मेरा। अब कुछ तो काउंटर प्ले करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। क्वीन को वापस तो लेके आ गया, चेक देते हैं इधर से। अब यार बुक को बीच में नहीं आया तो फिर मुझे भागना पड़ेगा। मुश्किल है यार अभी। अब तो अच्छा खेलेगा ही। अब तो यार कुछ उनको नहीं दिख रहा। नहीं करना पड़ेगा। वो भाई बहुत गंदा ब्लंडर किया मैंने, अच्छा खासा मैं जीत रहा था। हाँ देखा, मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस इससे बेटर था इस ब्लंडर के बाद भी। भाई यार वो बहुत गंदा ब्लंडर किया मैंने। नया मैच। Okay, so we have French defense classical variation again. Okay, this is the bishop g5 variation. e5, he can play h4 or he can take this bishop. So he went for h4 line. Now he'll take, I take, and then I'll castle. He can play f5 or this is some new move. I'm not really sure about, but there are a lot of lines where he will go knight f3 to knight g5. Yeah, f5 is a move, f4 and f5 is a move. My idea is to like block this diagonal because it creates a lot of problem in French. So you don't allow him. And if my knight is able to come here, if he takes, if he say takes this, then it's also fine because my knight will defend this square. So and he didn't. So I can just continue with my progress. He will again, I think, go for this idea because this will be a meeting plan for him. Now the next move will be knight g5. So what I can do is I can move my rook and then bring my knight to f8 because this will sort of trap. Yep, this will sort of trap this queen, and then I can bring my bishop to be. Ah, it's okay. My knight is better placed here. Now I can comfortably take this pawn. I can also give this check in the future. I can maybe push this pawn as well.
Again, this move is not so good. He can push this pawn when I take. If we move this bishop, then it will be a mistake because I can then push this pawn and then it will be a mate. So it's fine. He didn't go for that idea. Now I can start pushing. He can also try to like put pressure on these two pawns, but it won't be an easy deal for him because the knight cannot come to these two squares. Like to attack this pawn, the knight has to come to these two squares, which won't be possible in this right now. Okay, he is coming to this c3 square. He can maybe try this. It won't be a bad idea, actually. Hmm. He is trying for this fork, which not bad. I cannot go bishop b7 because then this rook will just take it. I can go bishop here. If he yeah, I can go bishop if he goes here, then this, but then this will be there, but then I can take this knight. So yeah, I can go bishop to a6. He first went to rook a3 to attack this bishop. Can I go there? But then I'll be in a triple fork, which might not be good for me. We can, but no. Yeah, I think I can try this move. It's like sacrificing this bishop, also all this thing. Do I have some, like, let's say he take, and then I take, he goes there. Like, I don't think that it was that straightforward, and he just thought, ki, okay, I will not go in those lines. But I think it was something that could be a possible option for him. Oh, wait, this is made right now. I cannot hurry in this situation because one mistake and we will lose the game. Like I have been losing again and again. Okay, take this. Knight b5 will be a mistake because of queen h7. Knight d4, not that bad. This is protected. I'm almost a minute up here. Can I get this check if you push? See, we can push, but it will just create a weakness for him. If I take, he takes with the pawn. It won't be useful. But if I take, he takes, then also it's not that great. He'll most likely move his queen somewhere. But now I can take this bishop because he won't be able to take with the queen. He will take with the knight, and then I can play queen before check. Just wants to exchange.
no matter what. And I don't want to exchange my queen. Let me think. Uh, अरे यार मेरा फिर से यार क्या करता हूँ मैं। क्वीन से यार ये लोग हैंगिंग में। अरे यार फिर से। अब ये रुक भी पीछे से आ रहा है। क्या करता हूँ भाई। ठीक है। ब्लैक करना उसको। यहाँ की ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मे बी कुछ टैक्स वगैरह लगातार देके हम कुछ कर सकते हैं। ओके। ओके। हम जीत भी सकते हैं। भाई साहब मैंने ब्लंडर करी, भाई ने और बड़ी बड़ी ब्लंडर कर दी। बट नॉट भाई, वो दुखी इडियट तो क्या ही खेला है मैंने। ठीक है लेकिन next is 2200 and this 25। भाई मिसटेक किया, मैं मार रहा था, सच में मैं मार रहा था। मैं ये नहीं चलने वाला था कुछ। क्या मूव है ये। सच में भाई। अरे यार बिशप पे नहीं ला सकता मैं। ये तो गलती हो गई भाई। पहले भी था उसके पास, शायद उसने भी मिस कर दिया, लेकिन दोबारा देख लिया। मैं क्वींस को भी बीच में नहीं ला सकता हूँ। रुक को बीच में लाऊंगा तो भी ठीक है, दे देते हैं। फिर देखते हैं। मैं मार दूं। कौन से मारेगा। नाइट से मार दूं। बिशप से नहीं मारेगा वो, बिकॉज ये हमेशा है। बात है। और वो बिशप से तो नहीं मारेगा। चेक। पीस तो गया है, बट क्या हम इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। ब्लंडर के बाद अगर मैंने गेम चेंज कर दिया तो ये बहुत अच्छा होगा। इसका बिशप पिंड है तो मैं मार देता हूँ इसको। हम्म, ये भी मार देता हूँ। अब वो कैसल नहीं कर पाएगा, बिकॉज मेरी क्वीन ने ब्लॉक कर रखा है। और यहाँ से भी नहीं कर पाएगा। इट्स नॉट सो बैड यार।
चलो एक कैसल तोड़ते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं ले सकता हूँ ना? हाँ, अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। चलो पीस के बदले मुझे 3 पाउंड तो मिल गए हैं। तो फिर, लेकिन अब ये बिशप को हटा ले, कहाँ हटाएगा? यहाँ से वो यहाँ ला सकता है। क्वीन से क्वीन तक चेंज करने का ऑफर है। वो मारता हूँ, मारता है तो क्वीन इक्वल ट्रेड होगा वो। हमें इक्वल ट्रेड इस पॉइंट पे नहीं करना है। मुझे मेक श्योर भी करना है कि मेरा कोई बैकग्राउंड बैकग्राउंड या कुछ ना हो। और वो इसमें ये भी ट्राई कर सकता है। मेरा आइडिया समय ये है। मिट हो रही है ना? Isn't this, am I seeing it correct? It's a 2200 player. Isn't this just mate in one clear plain back rank? Mate in one? Am I saying it wrong, guys? Is it really? Okay. मेरे पास 1 मिनट 40 सेकंड है. Should I tease him? Wait, maybe I'll just play. Yeah, this was just a blender. Know. Interesting. Let's see the game review for this one. Okay, very bad. We did a blunder. We missed all of his blunders. क्या है ये? हाँ, ये तो ऑफ कोर्स मिस टाइप था मेरा। तो हमारी जो एक ब्लंडर थी वो मिस टाइप था। एक्चुअली ब्लंडर नहीं करी है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट खेला पूरा। E5 was a mistake. He just wanted me to normally develop. Took okay. Knight E D5 was a mistake. And castling was also a mistake. He wants me to play bishop C4. बेटा मेरे को कैसल तो अच्छा लगा था, बिकॉज रुक के पास अच्छा खासा प्ले आ गया। जब हाँ क्वीन, ओके हाँ मैंने जो ब्लंडर करी थी, क्वीन G5 चेक एंड देन बिशप टेक्स। एंड फिर जो मैंने बिशप C4 खेला वो ऑफ कोर्स इस ब्लंडर में नाइट D5 इज द करेक्ट मूव। बिशप टेक्स, ओ ही इसको सेक्रीफाइस कर देना था, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। देख रहे हो मैं पीस डाउन हूँ लेकिन फिर भी मैं 1 पॉइंट हूँ। मतलब मैंने बहुत अच्छा खेला है। क्वीन इज अ ब्लंडर, बिशप टेक्स। ओ, दिस इज अ ब्लंडर। लेकिन क्यों? ये बोल रहा है कि मैं बिशप G5 खेलूंगा, वो किंग इधर जाएगा। ओ, वेट वेट वेट, क्वीन D5 चेक, क्वीन D5 check, because if he takes then rook E8 is a mate, so he cannot take, so he has to go back. And now what do we do? This, no, no, not working, not working. Can I take this? Yes, can I take this bishop, guys?
Yeah, I can because if he takes, I take. He goes there, then this check. Queen has to block, and then this is checkmate. And what do so he maybe and this is also currently mate, so he can maybe push this bishop to e7. Okay, he wants me to no, I won't take this. इसको लेना तो खराब ही है मतलब मेरे को लगता है ये फिर भी बेटर है बट अब ये चेक आएगी वो इधर जाएगा तो फिर क्या मैंने चेक दिया किंग भाग गया ओके मैं बिशप भी मार दूंगा यार कितना अच्छा मूव मिस किया ना ओके दिस इज ऑल फाइन रुक d8 वाज अमेजिंग मैंने यहाँ पे अपना पूरा एडवांटेज खो दिया मतलब इस मूव पे दिस इज ऑल फाइन दिस इज ऑल्सो गुड दिस इज हाँ दिस वाज अ मिस्टेक तो पीछे लाना था क्या बोल रहा है ये मेरे को मार लेना ओके हाँ मैं रुक भी तो बीच में ला सकता था मिस कर दिया यार ये तो हाँ ये तो ऑफकोर्स फिर ब्लेंडर ही कर दिया उसने लेकिन भाई वो मूव चलो फिर हम एक आखिरी गेम और खेलेंगे एंड फिर हम चलेंगे तो वी हैव क्वींस गैम्बिट अगेन नो different weird opening I don't know why people play this very weird opening okay I'll just develop my pieces and I'll castle um ठीक है I can I want to take this pawn बिशप इधर आ सकता है इसका मेरे को मन कर रहा है सेक्रीफाइस देके खेलने का तो इसलिए मैं सेक्रीफाइस दूंगा सेक्रीफाइस काम आ गया गाइस क्वीन बचाएगा क्योंकि अभी फोर को रहा है किंग इधर जाएगा तो फिर ये चेक किंग इधर मेट तो हो रही होगी 100% हाँ of course resigned okay so let's see what is our brilliance in this game what what did I do oh I don't want to play another game no I want to see the previous one तो हिस्ट्री में जाते हैं इसका रिव्यू देखते हैं 16 मूव का गेम है बस 92.7 amazing so simple this is weird okay this is all simple openings I was just developing my pieces nothing fancy knight g5 is good bishop okay f4 is not a mistake in fact it's an excellent move I was sacrificing it it was an excellent move he takes f4 and knight takes f4 is an excellent move yeah I knew it he took take with bishop this check and it's over it's actually a forced mate he cannot do anything he has to give up his queen to continue और like even then it's a mate तो देखो अगर वो इधर जाता है चेक इनको इधर जाना पड़ेगा और मेट अगर वो इधर जाता है तो चेक किंग इधर जाएगा चेक नहीं ये नहीं इधर जा सकता है ओ पॉन चेक और मेट भाई और अगर वो नाइट के बीच में लाता है तो फिर हाँ ही विल सरवाइव
अमेजिंग यार, ये गेम मस्त था। चलो फिर चलते हैं। बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय स्ट्रीम। सी यू अगेन सून।